computer has the many type. आमे जेतबेले कौनसी जगह रे वैल्यू स्टोर करिवा आमे कोन करछे ना वेरिएबल डिफाइन करछे तो वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन where we store the value and that value is always changes जेमति केटी तमर एबे क्लास हला तुम क्लास सरी गला पर ए जगह की बसियो तो वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन where we store the value and that value is always changes तो से जो वेरिएबल ले कोन सब वैल्यू रखिबी सेटा डिफाइन करबो डाटा टाइप सो डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल स्टोर इन ए वेरिएबल तो वेरिएबल ले को भलिया वैल्यू स्टोर हबो सेटा डाटा टाइप डिफाइन करिवो तो जावा रे कोन रहउछि हमर तीन प्रकार डाटा टाइप अछि गोटा हला प्रिमिटिव डाटा टाइप रेफरेंस डाटा टाइप एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप तो डाटा स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ऑफ मेनी टाइप तो जावा इज ए स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज तो सेति पई हमर जो जावा रा जो सब डाटा टाइप अछि एटा तीनटा पार्ट रे डिवाइड हैला तो फर्स्ट आसीबा प्रिमिटिव डाटा टाइप इट इज कॉल्ड द बिल्ट इन डाटा टाइप इन द जावा इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डाटा टाइप माने जो डाटा टाइप टा जावा रे ऑलरेडी डिफाइन हे कि अछि ताको प्रिमिटिव टाइप बोली कहबा आ एई जो प्रिमिटिव टाइप अगेन चारटा कैटेगरी रे डिवाइड हे छी गोटा इंटीजर टाइप कैन स्टोर होल नंबर ओके floating point type can store the fractional number boolean type can store true and false value character type can store the symbol letter and number तो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टोर करिवो सिंबल स्टोर करिवो लेटर स्टोर करिवो तो एटा होची प्रिमिटिव टाइप बोली कहिबा इंटीजर होल नंबर रखिवो फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शनल रखिवो बूलियन टा ट्रू एंड फॉल्स रखिवो कैरेक्टर कोन करिवो नंबर आउ सिंबल सब रखिवो तो ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप अच्छी अगेन ये डिवाइड है चारटा ग्रुप रे जेमति इंटीजर कोन रहला बाइट शॉर्ट आईएनटी लॉन्ग एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर होची 0 ओके इंटीजर रो सब जगह डिफॉल्ट वैल्यू 0 हला फ्लोटिंग पॉइंट रे कोन रहला 0.0 0.0 बूलियन रे रहिबो साइज हला 1 बिट रेंज हबो ट्रू और फॉल्स रहिबो आउ डिफॉल्ट वैल्यू रहिबो फॉल्स डिफॉल्ट वैल्यू होची आमे जदि कोनोसी प्रकार वैल्यू स्टोर न करिवा ताले को प्रकार वैल्यू रहिबो ना फॉल्स सेमते कैरेक्टर रहिबो साइज हला 2 बाइट डिफॉल्ट वैल्यू हला ना बुझिला देखा तापर हला रेफरेंस डाटा टाइप कंटेन द address of dynamically created object it doesn't have its own value आर कोनोसी निजर वैल्यू रहिबो नै किंतु ये केवल तारा एड्रेस रखिबो जादर के हमरा वैल्यू स्टोर हो जेमति कि रहिबा हमें आरए डिफाइन करिबा तो आरए रे कोन आसीबो आरए रे जतल वैल्यू स्टोर हो एटा गोटा होची एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो तो ये सब लोकेशन एडजेसेंट लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो okay so it doesn't contain the value of its own it contains the address where your value is stored it is also known as non primitive data type default value of the variable of a reference data type is null माने आ भीतर जदि हमें कोनोसी वैल्यू न रखिबा तो डिफॉल्ट वैल्यू आर null रहिबो the example of reference data type are one is object or another is array okay एटा को reference data type बोली कहया जिवो abstract data type that include the data type from the derived data type जेतल मु क्यार डिफाइन करूची क्यार एन तो से समय मु गोटे लेटर स्टोर करिवि जदि मते मल्टीपल वर्ड स्टोर करिवार अछि तो क्यार एन देन साइज एठी देली 5 ता भीतर मु वैल्यू स्टोर करबी सपोज हेलो जदि 8 रो अधिक वैल्यू स्टोर करिया को चाहूची ताले ए जगह रे वैल्यू स्टोर हबो नाही तो से समय जदि आदरे लेस वैल्यू मु स्टोर करिवि ताले कोन हबो ना जो मेमोरी अछि से मेमोरी टा कोन हबो ऑक्युपाइड हेकी रहिबो धर ये क्यार एन 5 दिया हला मुझे 5 रु अधिक लेटर स्टोर करिया चाहूँ एटी स्टोर करिया हबो नै जदि मु लेस स्टोर करूची सपोज हेलो जगह मु खाली एच हेले लिखली आ गोटे स्पेस रही गला से स्पेस टाटा फ्री हबन ओके माने एटा फिक्स्ड मेमोरी जो जगह रे हमर दरकार तो हमें क्यार डाटा टाइप यूज करले तो ता जगह रे हमें कोन यूज करिवा ना क्यार बदल रे हमें स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करिवा तो एठी as much as character हमें एठी स्टोर करि परिवा आदरे कोनसी प्रकार मेमोरिटिकल restriction रहिबो नै as much as character हमें एठी स्टोर करि परिवा it include the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type for example string is a abstract data type that store letter digit character ये सब जिनसे हमें रख करी
बुझीगला लिख एटा नोट करो खाया आसेनी कि A variable is the name refers to the memory location where some data value is stored. जेतला हमें डाटा टाइप डिफाइन करूचे से जगह हमें वेरिएबल डिफाइन करूचे जेंते कि सपोज mo रखले int age तो age टा होची कोन वेरिएबल सो इट इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड constant is a memory location where the value is fixed the value is never changes so you can assign the different value to a variable during program execution so java allocate the memory to each variable that you use in a program each variable that is used in a program must be declared first तो जो भी वेरिएबल हमें सब डिफाइन करवा सेटा को हमें फर्स्ट डिक्लेयर करिया को पड़िबो तो ये जो वेरिएबल सब अछि नेमिंग कन्वेंशन ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल द नेम ऑफ द वेरिएबल नीड्स टू बी मीनिंगफुल धर मु कार गोटे एज स्टोर करूची मु ना देबी एज देबी मु डिफाइन करि परिबिनी एक्स वाई एला सब डिफाइन करबी नाही तो हमें गुड प्रोग्रामर हवा हमें वेरिएबल टा जोथि पय हमें लिखुचे तो सेही पर्पस पय याको यूज करिवा दरकार a variable name must begin with a letter or underscore कौन सी लेटर जंती मो स्कोर डिफाइन करियार अछि मो स्कोर लिखिबी ओके एंड जदि मते कौन सी सिंबल दरकार ताले मो अंडरस्कोर यूज करिवि ओके अंडरस्कोर देन एज जेमती लिखि परिबी ओके सो बट आई कैन नॉट गिव द वेरिएबल विथ द स्पेस जेमती कि मो लिखि परिबेनी स्टूडेंट स्पेस नेम एमती डिफाइन होबो नै it cannot you cannot give any white space character or you cannot give any kind of number you cannot give the dollar माने केवल आ भीतर जदि स्पेस मते दरकार धर स्कोर डॉलर ए डॉलर सिंबल हमें यूज करि परिबा ओके तो डॉलर स्कोर यूज करि परिबा अन्य कोन सी वेरिएबल ए सब जिंस बा अन्य कोन सी सिंबल यूज करिबा नाही वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट कोन सी प्रकार डिजिट रु स्टार्ट होबा नाही ए वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड व्हाइट स्पेस ए व्हाइट स्पेस रहइबो नाही वेरिएबल नेम इन जावा इज अ केस सेंसिटिव मु जदि लिखुची एज मु डिक्लेयर कली एज आ गोटे जगह मु लिखिबी एज इज इक्वल्स टू 5 मीनिंग वाइज इंग्लिश मीनिंग वाइज इट इज सेम बट this age the small age and the capital age is different in the form of programming language the program treated the two variable as a different thing okay so it is a case sensitive मु जदि age एमती डिफाइन करछि तो कैपिटल एज रे मते लिखिबा को पड़िबो बुझला तो एटा हला वेरिएबल नेम तमे फर्स्ट लिखो व्हाट इज वेरिएबल हेडिंग द वेरिएबल variable is a memory location where we store the value variable is a memory location where we store the value variable is a memory location where we store the value and that value is always changes and that value is always changes that value is always changes next constant is a memory location heading the constant is a memory location constant is a memory location where we store the value constant is a memory location where we store the value that value never changes constant is a memory location where we store the value that value never changes एबे एटा हला द नेमिंग कन्वेंशन रूल मींस जेतला वेरिएबल डिफाइन करबा कोन रूल रहइबो देखिने जेतेबेले जावा रे हमें फास्ट प्रोग्राम लिखिबा तो प्रथम हमें क्लास कीवर्ड ता डिफाइन करबा आज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन तो हमें प्रथम क्लास डिफाइन करबा क्लास then class name ता भीतर हमें स्टेटमेंट लिखिबा तो एक क्लास भीतर जहां हमें डिफाइन करबा दैट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ वेरिएबल the variable
and function defined inside the class is called member variable or member function. The variable and function that is defined inside the class, कौन सी variable और function जदि class भितर define करूचे सेटा को member variable बा member function कहा जीवो. जावा रे जेतरा में प्रोग्राम लिखिया प्रथम क्लास नेम देन बॉडी स्ट्रक्चर लिखा हुए. एटी कौन सी हेडर फाइल लो स्टार्ट करा जाए नहीं इनिशियली जेतरा हमको दरकार पड़िबो जो हेडर फाइल लो से हेडर फाइल में डिफाइन करियो. बुझियला देखो जावा में प्रोग्राम लिखिबा जावा में जेतरा प्रोग्राम लिखिबा में क्लास नेम डिफाइन करियो. Then class name suppose my class, the class or body, then define our public static void main then string here. तापर हमें इटा लिखिबा system dot out println hello java. है ना खास प्रोग्राम